Hello, good evening, and a very warm welcome to the next session of our Powerhouse Series BFSI. Today, we will be continuing with the financial markets, of course, with Hamad. But before that, I would like to know that most of you have joined the WhatsApp group without any trouble, and you're a participant of that group as well. You guys can type in the chat box. And is anybody facing any issue joining the group, or you're unaware about the group? Okay, no issues. That's great. So, okay, Kiran, what you need to do is you need to go to the handout section. You need to download the WhatsApp QR code file and scan this through your WhatsApp application. You will be able to join the BFSI group. Nadia, same for you. Just download the WhatsApp QR code image from the handouts and scan this through your WhatsApp application. Okay. So while others are doing this, can I have some feedback regarding the last session? Is there no feedback? Kiran, you can still download that image. Okay, people, feedback. It was great. Really looking forward for today's session. Thank you, Dr. Razik. Okay, so anybody wants to recap the last session for me? You guys can raise your hand. I can unmute you and you can speak up. I can see some participants of the 6 digits program. You guys know the drill. You know how to recap the previous session. You know how to give feedback. Why are you guys so shy in these sessions? Okay, thank you, Adnan. What is financial market, capital market, money market, differentiation? Thank you, Adnan. Anybody else? Primary and secondary markets. Yes, that's correct. So let's just jump onto today's topic, the next topic. Hamad, can I hand this over to you? Thank you, Asghar. Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. Good evening. Yes, thank you so much, Firoz. All right, I hope everyone is doing well, and
I really hope that the last session went well as well. Quick introduction. We've already got the introduction previously, but a quick introduction again. My name is Hamad Javed Fohra. I'm a fellow member of ACCA, also have an MBA in finance and currently pursuing my MPhil in finance. I've worked in the banking industry for about 8 years, started my career with AF Ferguson and Company Chartered Accountants, and currently associated with the academic industry working as an assistant professor. And that's about it. What we have for today is I'll be sharing the slides in a moment. Feroz, if you can give me that option, please. Rahmat. Here you go. All right, thank you. Can you please confirm if everyone can see the slides? Feroz, can you confirm, are the slides visible? Yes, Hamad. All right, perfect. Acha Jana. So the topic we have for today is rather interesting. It's uh, financial risk. It's about financial risk, and it's about its identification and its management. Now, if you talk about financial risk itself is a complete uh, course. See, it's a science altogether. There are a lot of models, there are a lot of technicalities, but obviously, before we jump into that, we need to understand certain aspects of financial risk. So we'll be covering all these things when it comes to financial risk. And if you just look at the agenda we have for today, we're going to understand what is risk, the type of financial risk, then we have the subcategories within the financial risk. Uh, then we're going to have a discussion that how do we actually identify financial risk and how do we manage financial risk. These are the five main things we're going to cover, but of course within these five things there are going to be multiple things, and we'll keep a very similar pattern just like we did in the last session. It's going to be participative. We're going to have a discussion over it, and we'll try level best that at the end of the session you guys are far more aware of financial risk as of today. Now, before I move forward, I would like you guys to tell me, in your personal opinion, what is risk? And Firoz, please let me know once the audience starts to give their answers. Usman Muhammad is saying uncertainty. All right. Umair is saying its chances of happening of an event, whether adverse or otherwise. Okay. Muhammad Arslan is saying situation involving exposure to loss. Muhammad Mosessim is saying fear of losing anything, exposure to loss. Adnan Naseem. All right. Perfect. Uh, all these definition, and of course, there are multiple other ways we can define risk as well, and all of these are one way or another correct. And even if you talk about the slides, I've given a number of definition. So someone said the chances of getting a loss. It's so in other words, it's your probability of a damage, the likelihood of suffering a loss, an event which exposes one to loss. But let's just talk about in the context of finance. Risk is simultaneously used as uncertainty. What is risk? It's basically the existence of uncertainty, and that uncertainty can result in a company suffering a loss. So
now we have two problems. We do know that uncertainty exists and it will continue to exist, right? And we'll have a discussion over this as well, that why would uncertainty exist. So uncertainty exists, it would continue to exist. Because of the uncertainty, there's a probability that there's a chance that we will be suffering a loss. Fine, this is all fine, but हमें क्या करना है? We need to identify what is the extent of that uncertainty. Can we actually quantify that uncertainty? And if so, how much loss are we going to suffer? Now, why is that important? Unless and until we cannot quantify the amount which we believe we are going to lose, we can't actually manage that. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको पता है कि next month you are going to suffer a loss, let's assume. Now I ask you that, okay, fine, how much worth a loss you're going to suffer, and you say that you don't know. If you don't know the amount, if you cannot quantify that amount, if you cannot guess that amount, then on what grounds are you going to manage it, hedge it, or whatever? So the first instance for any organization or for any analyst, for any finance professional, is to identify that yes, the loss exists. Okay, fine. To what extent we can expect this loss to be, and if the loss does occur, what is going to be the amount or the quantification of that loss? That is the whole uh, idea behind risk management. Now, we all understand and we've studied that it goes without saying that risk and return work simultaneously. The higher the risk, the higher is the return. That is a general understanding, because ये concept ही बना है uncertainty से. The more uncertain something is, there's a higher probability of getting a higher return. क्योंकि अगर risk ज़्यादा है, risk is a uncertain probability. There's probability of something happening. तो अगर negative side पे जा सकता है तो उसका upside भी हो सकता है. So there's a downside to it, there's an upside to it. So whenever the uncertainty is high, the chances of getting the higher return exist as well. And we all know this. What we need to do is, if we are qualified to identify and quantify the risk, we can actually use that knowledge, we can use that expertise to ensure that we minimize the downside and we maximize the upside. That is the whole point. And that's why what companies are doing, and there are qualifications for it, so on and so forth. Every company, I'm not taking questions or I'm not discussing that, because I'm assuming we all know this, but I'm just making a ground here. So all type of companies need risk management, be it FIs, be it non-FIs. Financial institutions हो, non-financial institutions हो, हर type की company को risk management चाहिए. ठीक है, but financial risk management किनको चाहिए? The answer remains the same. Financial risk management भी दोनों type की companies को चाहिए. But the thing is that when we talk about financial risk management, the extent to which a financial institute is exposed to the risk is far greater compared to a non-financial institute. Financial institute का exposure financial risk से में बहुत ज़्यादा होता है compared to non-financial institution. Consider a cement manufacturer. Cement manufacturer का financial risk उतना नहीं हो सकता जितना एक बैंक का होगा, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंक हो, so on and so forth. और उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का एक्चुअल बिजनेस, द वे दे एक्चुअली मेक द मनी,
is via dealing with financial instruments, dealing in the financial markets. So when you're dealing with financial markets and financial instruments, you're exposed to financial risk in a far greater extent compared to non-financial institutions. Right? Now we're going to talk about financial risk. Financial risk की जब हम बात करते हैं तो हमें उसको पहले we need to understand its type. And एक minute before we actually start off with the types of financial risk, तो फिर non-financial risk क्या हो गया? See, risk can be of any type. Eventually, risk का मतलब ही या risk को हम drag down ही कर रहे होते हैं on the grounds of finances. हम उसको quantify कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि it's the uncertainty which results in a loss. Of course, so that exists, but financial risk जो अलग से हम बोल रहे हैं उसके पीछे reason है the instruments engaged, the instruments involved in the transactions. And abhi jab we are going to discuss the types of financial risk, so we'll understand कि हम इसको financial risk particularly क्यों बोलते हैं. तो but हम types पे जाने से पहले अगर हम समझें कि आज तक risk management में क्या हो रहा है, so everything whether we have seen a lot of risk management happening. Internal controls are part of risk management. Those who are associated with financial industry must have heard the term ICFR, जो पाकिस्तान में apply होता है ICFR, which means internal controls over financial reporting. The internal audit department itself, that is there to help in I would say controlling or minimizing risk. Your entire concept of enterprise risk management, all the big fours, in fact, if you go beyond big fours, there are specialized department working behind or working towards enterprise risk management. Usme hum log, if you guys remember, COSO ka framework hai, and we're talking about internal controls over there, and you identify gaps in your systems. All of that trims down to one thing, and that is to have an effective risk management system. Now, if you're going to classify the types, so we have credit risk, we have market risk, we have liquidity risk, and we have operational risk. Now, I hope that we are able to cover at least three of the main risks here. That is the credit aspect to the risk, the liquidity aspect, and the market aspect. Operational risk itself is huge, and I'll give a flavor of this as well, but we'll do that step by step. Just a minute. If there are any queries so far, please shoot them. If not, so I can move forward. Feroz, please let me know if there are any questions from the audience. I think we should move forward. All right. Now, we are going to talk about credit risk. What exactly is credit risk? So I need answers from the audience now. What is credit risk? Risk of default by Risk Kumbharaza. of default. Okay. Murtaza is saying risk of default as well. अच्छा, ठीक है. Generally हम सब, और ये इसमें कोई गलत बात नहीं है. General understanding is just risk of default is credit risk, but credit risk has certain what I would say qualities, जिसको मैंने नाम दिया था पहले, सब categories हैं credit risk के अंदर भी. Credit risk by definition is the probability that
the counterparty may fail to fulfill its financial obligation. Okay, and there's a monetary exposure which results in a loss. वो तो हमें पता है. इसके अंदर दो चीज important है. That is a credit event. Credit event refers to the change in the counterparty ability to perform its obligation, and the recovery rate. That is the percentage we expect to recover from the counterparty once the credit event occurs. Now I'll stick to this part. That is the chance that the counterparty may fail to fulfill its financial obligation. This itself is the definition of credit risk. But if I take you guys and show you something, credit risk जो आप लोगों ने मुझे बताया can be considered as a default risk. That is, this is the risk that the counterparty will not repay. But that's not just credit risk. There's another credit risk. There's a risk of bankruptcy. जो bankruptcy risk हम बोलते हैं, that is also credit risk, but उसकी nature अलग है. Nature में ये है, default means the counterparty has default, खत्म. Bankruptcy risk ये है that we may not recover the full amount. So for example, if you lend someone 100 million, the party defaults. उसमें bankruptcy risk क्या है? उसमें bankruptcy. Let's assume the party pays you only 20 million out of that 100. So we will not be recovering the 80 million. That is your risk of bankruptcy. The country risk or the sovereign risk is part of your credit risk. We know that हर country की ratings होती हैं on the basis of this. Then we have settlement risk. Settlement risk के अंदर you have default risk, which we have already covered, and timing risk. Timing risk is also very crucial. We as finance professionals should never ignore this aspect of credit risk as well. And this refers to bracket. If you read the bracket, it says delay payment. Now, can anyone tell me why this is a risk and why are we considering it as part of credit risk? Please, audience. If anyone wants to switch on their mics and just give an answer, please do so. Mustafa is saying time value of money. Imran Tariq is saying cost of running business. Kumbar is saying kindly repeat the question. Kumbar, Hamad wanted to ask why the settlement risk is important. Why is it important to always look at the aspects? See, guys, why I am taking you guys into this detail is we all understand कि भाई credit risk का मतलब default, fine. But is it only the default aspect which you guys or I myself or all of us should be looking at? No, there are other aspects to risk as well. The client might not default actually, but there's a timing risk within that as well. That is also part of credit risk. And I got some right answers that time value of money. If you do not get your payment in time, we know the opportunity cost of it. That is the opportunity cost. Technically, time value of money helps us in quantifying the opportunity cost. Had we received that money on time, we would have invested it somewhere else and received the return. And now just think about this. और इसको जरा रखो एक बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के एस्पेक्ट पे कि एक बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के लिए टाइमली पेमेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट है. जिस बिजनेस का पूरा मॉडल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे रिलाई करता हो,
लेंडिंग पे रिलाई करता हो, इन्वेस्टमेंट्स पे रिलाई करता हो, उसके लिए पैसा टाइम पे रिसीव करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है. We do say that banks exploit us because when we delay our payments, हम लोग के ऊपर surcharge लगता है, हम पे penalties लगती है. Why does bank do that? To compensate for the timing risk, to compensate for the loss suffered because of time value of money. Hope I made myself clear with in this aspect. Firoz, are there any questions from the audience? Uh, All right. There's another very interesting aspect of credit risk known as concentration risk. Concentration risk actually results in credit risk. How? You keep giving money or you keep investing in a particular type of company or a particular type of financial instrument. तो आपका concentration बढ़ जाता है. If we remember, if we try to recall the concept of making a portfolio management क्या चीज थी? Portfolio management हमें यही बताती है that you do not put all your eggs in one basket, and the reason was pretty clear. It was to diversify the risk. You keep giving money to one person or one entity, or you keep buying shares of one entity. What are you doing to yourself? You're getting into a concentration risk. उसमें क्रेडिट का एस्पेक्ट ऑब्वियसली इक्विटी खरीदने में क्रेडिट नहीं आता, बट इसी को अगर आप पैसे उधार दे रहे हैं, चाहे कंपनी को दें चाहे इंडिविजुअल को दें, तो क्रेडिट रिस्क अराइज होगा. बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन रिस्क, your chances of bankruptcy risk and settlement risk increases. And this issue can cause other risk to trigger. Because of this one mistake, because of this concentration risk, we give rise to settlement and bankruptcy risk, which itself gives rise to another type of a risk, and we'll discuss that in a while. I hope I've made myself clear so far, guys. If you have any queries so far, or any question, or any comment, please bataiye so that we move forward. Kiran is asking, can you repeat the relationship between the credit risk and time value of money? All right. See, credit risk is a broad category. Within credit risk, we have different type of risk. All of these are part of credit risk. Or all of these, if you cannot understand it from this aspect, इसको समझें कि ये जितनी चीजें हैं, ये जितने रिस्क मैं बता रहा हूँ, ये वो रिस्क हैं जो एक्चुअली क्रेडिट रिस्क के अंदर तब्दील हो जाते. ठीक है. अच्छा, अब इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कैसे आप लिंक करते हो? उसको ऐसे लिंक करते हो दैट देयर इज अ रिस्क विद इन क्रेडिट रिस्क जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट रिस्क. सेटलमेंट मींस टू सेटल डाउन or to discharge your liabilities, right? So I gave Firoz some money, and Firoz promised me to return it back after 6 months. If Firoz does not, I'm going to classify it as a default risk. मतलब क्रेडिट रिस्क में डिफॉल्ट रिस्क हुआ है. ठीक है, ये एक सिनेरियो था. लेट्स कीप दिस असाइड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट देयर इज अनदर रिस्क. Although Firoz did not default on his payment, but Firoz is delaying the payment. Hence, there's a timing risk. जो पैसे मुझे 6 महीने में मिलने थे, let's assume अब वो मुझे 9 महीने के बाद मिल रहे हैं. So there's a lag of 3 months. This 3 months जो मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, इस पे I lose further. Why do I lose? Obviously जो मैंने first 6 months के लिए फिरोज को पैसे दिए थे, उस पे मैंने कोई ना कोई इंटरेस्ट चार्ज करना था.
So for the first 6 months, I assumed that Feroz is a very good friend of mine. He's a gentleman, so he's going to return my money within 6 months. And for that 6 months period, मुझे certain percentage of return या interest मिल जाएगा. Hence, I compensated myself for the time value of money. ये 6 महीने का था. But जो फिरोज ने further 3 months delay किया, जो defer किया, that is my risk of losing more. जिसकी वजह से actually banks आप पे penalties charge कर रहे होते हैं. Because this is a risk, and the risk is not just time value of money. The risk is also the fact that had if you had that money 3 months before, आप उसको बहुत सारी दूसरी चीजों में यूटिलाइज कर सकते थे, जिसकी वजह से आई यूज द वर्ड opportunity cost. Time value of timing risk would result in an opportunity cost for the bank or another FI. I hope all of you are clear. Any question? Feroz, please let me know if there are any further questions. No, not yet. Farhan, we will be taking a namaz break around 7 p.m. So you'll need to wait till then so that all the cities are covered. You can move ahead, Hamad. All right. Now I'm going to briefly cover market risk. We just covered credit risk. Now, once we understand the risk aspect of these 4 categories or 3 categories, then we are going to talk about its identification, and we're going to talk about its management. This is how I've covered the lecture today, right? Market risk. What do you guys believe is market risk? Answers, please. Participants, come on, please give your opinions on market risk. Rohan is saying risk from positions in market. Imran is saying uncontrollable risks. Mohammad Usman is saying uncertainty in the market. Mohammad Wasif is saying changing market condition could cause cost or loss. Risk from the market itself, like price hikes, competitors, etc. Mohammad Muhtasam. And then there is Hamad Rehan, the risk of market value of a commodity rising or falling. All right. Uh, the last two definition from, I believe, Hamad, and I don't recall the second last name, are more, I would say, quantified. The rest are fine, but those were the factors rather than the way you can define market risk. See, we understand what is risk. We need to understand the market aspect to it. And the market aspect of risk is the uncertainty of losing due to changes in the market. The risk that the volatility of prices in the financial market would result in a loss. And someone rightly pointed out this is an uncontrollable risk. जिसको हम फाइनेंस की लैंग्वेज में या jargon में हम बोलते हैं, we categorize risk in two aspects: the non-systematic and the systematic risk. The risk coming from the system. Can we control market risk? No, of course not. We can't even control credit risk. आप जाके you can't change a credit event happening ना. आप जाके अपनी counterparty को पकड़ के ही नहीं बोल सकते कि why are you you know why are you in a position to get default? There can be multiple reasons for that. Market risk है, इसको हम systematic risk भी कहते हैं. That is the risk resulting from the volatility in prices. And volatility means this would result in  Volatility means either it rapidly goes up, it rapidly goes down.
Something similar was happening a few weeks back with uh, dollar PKR parity. There was a lot of volatility. Volatility exposes us to risk, but it can also give us high returns. वॉलेट मार्केट रिस्क के अंदर हम उसको दो टाइप्स में देखते हैं, वहां पे हम लोग अभी और उसकी सब कैटेगरीज पे मैं आता हूं, बट इट कैन बी एन एब्सोल्यूट रिस्क, दैट इज द वॉलेटिलिटी ऑफ टोटल रिटर्न्स, और इट कैन बी अ रिलेटिव रिस्क, द डिफरेंस रिलेटिव टू अ बेंचमार्क. ये दो अलग बातें हैं. कैसे, मैं थोड़ा सा इस पे ब्रीफ देता हूं. एब्सोल्यूट रिस्क का मतलब, you bought a security, you invested in financial market. आपके जो रिटर्न्स हैं, your total returns are volatile compared to yourself. मतलब आपके हिस्टोरिक पैटर्न से there's a lot of volatility. इसी तरह तो volatility measure होती है. You calculate returns in the previous year, you check this one, you average it out. Relative risk is आप अपने रिटर्न को कंपेयर कर रहे हो, लेट्स अज्यूम with KSE 100 index. Now KSE 100 index is a benchmark. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये आपका बेंचमार्क है. मे बी रोहान का बेंचमार्क यूबीएल का इक्विटी फंड हो, ठीक है. हमाद का बेंचमार्क एबीएल का मिक्स्ड इनकम फंड हो. सो इट कैन बी अ म्यूचुअल फंड एज वेल, इट कैन बी द रिटर्न और द यील्ड ऑन योर टी बिल एज वेल, व्हाटएवर. ये आपकी चॉइस है कि आपने बेंचमार्क किसको रखा है. So the difference between the return of the benchmark and the return of your investment results in a market, shows the market risk, and this is referred to as a relative risk. If it's positive, the risk converts into the return. If it's negative, it becomes a loss. अगर KSE 100 इंडेक्स का रिटर्न 20% आया और आपकी इन्वेस्टमेंट का 15% आया, so the relative risk is 5%, and you have lost 5% compared to a benchmark. This is how you actually look at the relative risk and the absolute risk part, right? Now market risk also have some subcategories. The interest rate risk, the commodity risk, the equity risk, the exchange rate risk. All these risks are considered as part of market risk, and the reason is that all these factors comes from the market. Think about it. Interest rate risk है क्यों? क्योंकि interest rate is dependent or is being derived from the market interest rate. Commodity risk क्यों है? If you guys remember, we discussed commodity markets in the last session. तो हमें पता था कि commodity की price कहाँ से आ रही है. Remember this. This is based on the volatility of the prices. Equity risk, of course, based on how the stock market performs, how the market is performing. And exchange rate risk, how the rates are being adjusted against the other country. Can we control this? No. Can we control this? No. Can we control this or this? No, we can't. We can't actually control it, but we need to have an idea कि ये risk आ किस वजूहात से रहा है. Just to tell you guys this, we are just looking at a bird eye view of these risks. इसके बाद हम इनको individually देखेंगे. So we are going to talk a little bit about credit risk individually. We are going to talk a little bit about market risk individually. Then we are going to talk about how to manage these as well. So I'm just giving an overview of the risk we have.
Very interesting, liquidity risk. What is liquidity risk? I need answers on this. Firoz, let me know, please, when you get the answers. Discount on the price of an asset due to its market demand, Okay, running out of cash, risk of not meeting payment obligation. perfect. So, what is liquidity? Liquidity is your ability to convert your assets into cash so that you can pay off your liabilities, right? That is how we define liquidity. So, that ability depends on two things. It depends on the asset in question. एक तो ये चीज हो गई, ये पार्ट आ जाता है लिक्विडिटी. दूसरा, the arrangement of funds. So liquidity risk, if you read the definition, is your possibility of suffering a loss due to the inability of sufficiently liquidate a position at a fair price. पहला मैंने आपको बताया, it's assets liquidity risk. Why do we consider property, plant and equipment as non-liquid asset? They are not considered as liquid asset because even if you force sale it, it's not going to fetch the fair price. ये asset की अपनी liquidity का problem है. दूसरा funding liquidity है. Now ये मैं इसलिए इस वाली चीज पे मैंने focus किया because we generally measure liquidity via current ratio, and when we say we consider that if current ratio is 1 or it's above 1, the company is fairly liquid, which is not the case. A company may be fairly liquid, but on the basis of current ratio, but the asset in questions are not liquid in nature. आपके assets ऐसे हैं कि वो foreign से position से exit नहीं हो सकते. If that's the case, if your asset liquidity is a problem, then you need to ensure that you still have funding liquidity. And how do companies manage that? Companies manage that via short-term borrowings, overdraft facility, so on and so forth. Payments कहाँ से आ रही हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से नहीं आ रहा. All of this is part of your working capital and your cash conversion cycle if you talk about non-FI. If you talk about a financial institution, so all of you who are associated with financial institutions must know that banks के अंदर एक committee होती है known as ELCO, the Asset Liability Committee. ELCO technically ensures that the financial institutions remain liquid. How do we do that? We'll discuss that in the later slide. And I'll just cover operational risk, then we'll take a break for namaz, and then we'll continue with these subcategories of risk, right? Operational risk, I said this previously, and I'm going to repeat this. This is a very huge aspect of risk. उसके पीछे reason ये है कि whatever we do, ठीक है, उसमें जो भी problems आ रहे हैं, that is all referred to as operational risk. It's your ATM doesn't work properly, you suffer a financial loss because of it. It's an operational risk. Your employees are less trained and they keep making mistakes, which results in financial loss to you if you quantify it. That's part of operational risk. And
मैं इस तरह आपको बता तो रहा हूं, बट ऑपरेशनल रिस्क इज एक्चुअली really difficult to quantify, and there are specialized models for that. जो entire concept of ERM है, enterprise risk management, it revolves majorly around operational risk. It has obviously other aspect to it, but its major revolvement is around operational risk aspect. Risk of loss due to operational inefficiencies like monitoring systems, management failure, defective controls, fraud, human error. It can be a model risk as well. जो भी हमने मॉडल बनाया है वो मॉडल प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को क्वांटिफाई नहीं कर पाता. द प्रॉब्लम हियर कंपेयर टू अदर रिस्क इज दैट ऑपरेशनल रिस्क को क्वांटिफाई करना पड़ता है. लोन में तो बड़ा आसान है ना, मैंने लोन दिया, मुझे पता है कि पैसे नहीं आएंगे, इतना लॉस होगा, इतना मैंने इंटरेस्ट खो दिया. इक्विटी में पता है ना, इतना इन्वेस्ट किया, मैक्सिमम लॉस क्या है, जीरो हो जाएगा. ऑपरेशनल रिस्क को कैसे क्वांटिफाई करूंगा? Human errors. It's not easy to quantify human errors. So the model you're using to quantify that itself poses a risk. People risk. Right? So this is the topic now which we are going to cover, that is the financial risk management side. So far, I'll just quickly repeat that. That's what we have covered so far. We talked about what is risk. We discussed the fact that why risk is, it's important to understand risk. We took a general understanding of how so far we know the risk is being managed. Then we talked about financial risk. और financial risk में हम लोग ने चार categories define की. We said there's credit risk, there's market risk, there's liquidity risk, and there's operational risk. Within credit risk, हम लोग ने बोला कि there are several other type of risk. There was settlement risk, जिसके अंदर default risk था and timing risk था. We had bankruptcy risk, which was related to not recovering the full amount. There was country or sovereign risk, that a country's inability to pay. And there was uh, another risk which I'm missing out. Let me just see. And concentration risk, yeah. And concentration risk में हम लोगों ने discuss किया that it is basically the risk arising because you have exposure within one area, or heavy exposure within one area or one individual, which gives risk, which actually give rise to other risk. ठीक है, और उसमें दो रिस्क आपके आ जाते हैं जो कि आपको डिफॉल्ट कर सकते हैं. वो आपका सेटलमेंट का इशू आ सकता है, उसमें बैंकरप्सी का इशू आ सकता है. और मैंने कहा ये रिस्क इटसेल्फ एक और टाइप के रिस्क को हिट करते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली लिक्विडिटी रिस्क. वो लिक्विडिटी रिस्क को ऐसे करते हैं, इफ यू कीप concentrating on one side, तो there's a probability कि आपको जब अपने आप लिक्विडेट करना हो तो योर liquidation becomes problematic, and that is either due to assets liquidity issue or funding liquidity issue. फिर हमने बात की market risk की. We understood that market risk is the volatility in the prices, and that is coming from the market itself. उसमें हम लोग ने 4 सब categories को describe किया. There was interest rate risk, there was equity risk, there was exchange rate risk, and there was commodity risk. और market risk में हमने बोला there can be an absolute risk, the risk that your returns are volatile compared to yourself.
or relative risk, that when you compare yourself with a benchmark over a period of time, अब जाहिर है एक horizon पे अपने आप को compare करोगे कि पिछले 5 साल में including current year मेरी performance compared to a benchmark कैसी रही, and if there's a lot of volatility तो हम उस चीज को बेसिकली मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? सो दिस इज नोन एज relative risk. Then we talked about liquidity risk. So we understood what is liquidity and what is the risk aspect to it. उसमें हमने funding risk को और asset liquidity risk को discuss किया. And then finally we talked about operational risk, and we understood that operational risk is basically the biggest aspect of the enterprise risk management systems, and it's coming from the inefficiencies of the entire system or the organization. और उसके different reasons हैं, हम लोग ने model risk की बात की, people risk की बात की, legal risk की बात की, so on and so forth. So far, do you guys have any questions? If you do, please raise your questions right now so we can have a discussion on that, and then we can go for a break. Firoz. It's not waiting for the questions. All right. Well, I think we should take the namaz break and wait for the questions to come in because I can't see much questions right now. All right, sure. All right, we'll continue after 15 minutes then. Yes, All right. all fine. So we'll start from here then. Done. Okay, thank you. Thank you.
All right. So we'll start again. Firoz, can you please just confirm if my slides are visible and I'm audible? Yes, Ahmad, you are. All right, fine. Acha ji. So now we are going towards the identification and management of financial risk. उनको हम सब categories में divide करके देखेंगे. Remember this one thing: risk is identified via evaluation. Most part of risk identification itself is subjective. देखिए, रिस्क आप आइडेंटिफाई दो ही तरीके से कर सकते हैं और इसी तरीके से किया जाता है. एक, you can have sophisticated models in place and you plug in certain values on those models and the models are going to give you a score. Based on that score, आप बता सकते हो ये transaction या ये exposure इतना risky है. Be it for banks, be it for investments, whatever. And what do I mean by that? Uh, there are models जिसके अंदर आप कुछ information डालते हो जो कि क्वांटिटेटिव नेचर की होती है. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन, कुछ उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते हो और कुछ इंफॉर्मेशन आप क्वालिटेटिव डालते हो, लाइक अबाउट द मैनेजमेंट, यू टॉक अबाउट the systems that those are in place, the governance system, the auditors they have, etc. The program gives you a score. Based on that score आप उसका risk quantify कर रहे हो. And this is not just for credit में तो ऐसा होता ही है. Market risk वगैरह में भी आप ये चीज करते हो. Market and credit, not in liquidity risk. ठीक है. अब ये तो हो गया model wise. The other is subjective. Subjective से मुराद, the way I see a particular investment or the way I see a particular customer would be different from the way you guys are going to see it. See, this is subjective in nature. Why? Because I may have a different sort of information. I may have a different perspective altogether, or I may be biased even. और ये problem रहता है, मैं biased कैसे हो सकता हूँ? This is the behavioral aspect within me, जिसकी वजह से मैं biased हूँ. And when I'm biased, I might give a biased opinion, but that's a problem which exists. So these are two ways you identify risk. And I'm primarily right now talking about credit and market. अब risk identify तो हो गया, manage कैसे करें? Manage करने के लिए first let's talk about some general things we have. We have talked about ERM, we have talked about internal controls. There are other ways जो कि risk को manage करवा रहे हैं. For example, there are Basel regulations. Basel 1 आया था, फिर 2 आया था, currently 3 चल रहा है. Those who do not have an understanding of Basel is basically uh, uh, regulations for the banking industry. It was basically signed between the world top banks in Switzerland. Basel एक जगह है, city है Switzerland में, तो इसलिए इसको Basel कहते हैं. Even Pakistan follows Basel with certain amendments. State banks make sure that banks follow that. Or the Basel Ali, itself. Ahmad, Sorry. sorry for cutting you off. Muhammad Ali covered the Basel 1, 2, and 3 in detail Yeah, while covering the I'm sanction. not going to So, cover Basel. yeah, I'm sure. I'm just highlighting these for the audience that if someone wants to recall or someone might have missed these concepts, they can revisit the recording links and refresh their knowledge. You may continue. Perfect, Sorry. perfect, perfect. Perfect. No, not at all. So Basel basically covers the three main aspect of risk. That is the credit risk, the market risk, and the operational risk. And it basically gives guidelines to banks and financial institutions कि आपने किस तरीके से अपने systems बनाने हैं,
किस तरीके से रिस्क को कंट्रोल करना है, किस तरीके से रिस्क को क्वांटिफाई करना है और रिस्क को रिपोर्ट करना है, ठीक है। दिस इज वन वे। इसी तरह सॉल्वेंसी है, सॉल्वेंसी इज वेरी सिमिलर टू बाजिल, बट दिस इज फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। वी डू नॉट हैव सॉल्वेंसी। रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के अंदर सॉल्वेंसी नहीं है, ठीक है। It's applicable in the European Union, but and it's very similar to how Basel works. But now let's talk about specific risk and how we're going to manage it. Credit risk हमने define कर लिया, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया credit risk क्या है। उसकी बहुत सारी कैटेगरीज भी देख ली, सब हो गया। अब बात ये आती है कि क्रेडिट रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं और उसको क्वांटिफाई कैसे करते हैं। आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू गाइस फॉर अ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले हम नॉन फाइनेंशियल की बात करते हैं। क्रेडिट रिस्क को क्वांटिफाई कैसे किया जा रहा होता है? प्लीज गिव मी योर आंसर। Bad debts, amount of credit, unable to pay his liabilities through modeling, aging analysis, looking at vendor aging, ratio. Yeah, the basic and the most basic thing we do and we study even, that is the provisioning of the doubtful debt. Now, why am I linking this? Because if we understand this aspect to it, पूरा risk को उसके ऊपर हम broader category पे लेके जाएंगे, basic concept हमेशा वही रहेगा। मुश्किल उसको, if we use fancy words for it, if we use different jargons, it might sound fancy, but the basic concept at the end of the day remains the same. What do we do in aging analysis, or what do we do when we're creating a provisioning? We look at the historic pattern. Based on that historic pattern, we try to predict this is how it's going to move in the future. And of course, if there are any changes in the current circumstances, we take that into account. So that's what you're supposed to be doing. यही मैंने आपको कहा था कि identification ऐसी होनी है। You look at the circumstances, you first look at the history. अब history में depend करता है आप किस चीज को देख रहे हो। If you're looking at a company, I'm going to look at how the company had performed in the last 5-10 years. Then I might project its financials in the future periods to understand किस तरह historic pattern चलेगा, और उस historic pattern को मैं replicate तो नहीं करूंगा, I'll adjust those historic patterns accordingly to get an idea how things are going to move. This is what we used to do. And why credit occurs, because you're working, why credit risk occurs, because हम काम ही उधार पे कर रहे हैं। And if you talk about a financial institution, again, जैसे मैंने example दी थी, cement industry का credit risk is far less than a financial institution. And even if the amount is high, उसकी extent कम होती है, उसकी complexity कम होती है। उसका credit risk क्या है? 10-20 wholesalers को cement उसने sell किया, 1-2 contractors को sell किया। एक financial institution का क्या है? Multiple customers. They are corporates, they are individuals, they are retail, there is commercial, there are investments, etc., etc. So how do we actually do that? And whatever we are discussing, this is all part of the slides. मैंने slides में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, so that later on if you guys want to revisit it, you might find additional information, including example, right? The first option a company has, now we know कि risk है, हमें पता है रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको क्वांटिफाई कैसे करना है, हम सब समझ गए। पहला ऑप्शन है सेल्फ इंश्योरेंस। व्हाट ऑन अर्थ इज सेल्फ इंश्योरेंस?
सेल्फ इंश्योरेंस इज अ कॉन्सेप्ट जहां पे कंपनी अपनी खुद इंश्योरेंस कर रही होती है। खुद इंश्योरेंस से क्या मुराद है? इट्स बेसिकली क्रिएटिंग अ रिजर्व। और वो रिजर्व ये नहीं कि आप पैसे सिर्फ रखते रहो। इट्स लाइक you invest in certain securities, you make a portfolio of securities, और आप उन सिक्योरिटीज के रिटर्न्स के थ्रू, उनकी प्राइस अप्रिसिएशन के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हो। ठीक है, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंश्योरेंस। सो फॉर एग्जांपल, मैंने, जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल ली थी दैट आई गेव मनी टू फिरोज, तो मैंने फिरोज को तो पैसे दे दिए थे फॉर 6 months, बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, बिकॉज लेट्स से मुझे मुझे कहीं से पता चला था कि फिरोज हैज एट टाइम्स टाइमिंग रिस्क आया है फिरोज का विद अदर पीपल। सो आई वाज अ बिट कंसर्न्ड कि यार ऐसा ना हो कि मेरी लिक्विडिटी भी अफेक्ट हो और ये डिफॉल्ट भी कर जाए, मुझे बहुत सारे इश्यूज हो। तो व्हाट आई डिड, आई ट्राई टू बी स्मार्ट एंड आई डिड अ सेल्फ इंश्योरेंस। तो मैंने एक रिजर्व रख लिया, मैंने कुछ पैसे उसमें सेव किए, कुछ पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए एक्विटी में, कुछ पैसे मैंने बैंक में रख दिए, एंड आई मेड अ डिवर्सिफाइड रिजर्व। बट दैट रिजर्व itself keeps me exposed to market risk। ठीक है, अब मुझे वो मार्केट रिस्क से भी एक्सपोज रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं पोजीशंस लूंगा, जब मैं रिजर्व बनाऊंगा और मैं इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, तो मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। जब मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, तो रिमेंबर दिस, द मोमेंट यू टैप द मार्केट, यू आर एक्सपोज टू मार्केट। सिंपल, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंश्योरेंस। What are the other ways you can manage it? Factoring. I'm not going in details of factoring because that is all part of curriculum. Factoring is when a company sells its receivables to a professional company। ठीक है, तो मेरा रिस्क बेसिकली ट्रांसफर हो जाता है। if I'm a company, मुझे पता है मेरे मेरे मुझे कैश की भी नीड है, एंड आई डोंट वांट टू डील विद द रिस्क एस्पेक्ट ऑफ इट। मैं सिंपल से अपने जो रिसीवेबल्स है वो किसी कंपनी को सेल कर दूंगा। नाउ दोज रिसीवेबल्स आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट कंपनी। सो दिस इज अ वे वी ट्रांसफर our risk to another entity। क्योंकि मेरे पास से रिस्क जा चुका है, हैंस मेरी रिस्क मैनेजमेंट हो गई है। The concept of factoring works in the financial industry as well, but उसके कुछ words different होते हैं। और in the last session we discussed about the financial crisis in a brief। उस फाइनेंशियल क्राइसिस में, इफ यू गाइस कैन रिकॉल इट, मैंने बोला था कि देयर वर टू मॉर्गेज कंपनीज जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग दे रही थी दो लोगों को, इंडिविजुअल्स को। और फिर उन मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी से इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उनके लोन्स बाय कर लिए। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, there are consumers, you, me, Firoz, all of us, people who actually took the mortgage loan। We took the loan from ABC बैंक। ठीक है, रिस्क इस वक्त एबीसी बैंक का है। एबीसी बैंक ने ये सारे के सारे लोन्स सेल कर दिए टू द इन्वेस्टमेंट बैंक। तो रिस्क एबीसी बैंक का जो था वो ट्रांसफर हो जाता है इन्वेस्टमेंट बैंक के ऊपर। सो फॉर एबीसी बैंक इट्स ऑल गुड। व्हाई? बिकॉज था बैंक, तो उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो गई है, उनको जो पैसे मिलने थे वो अप फ्रंट मिल गए हैं, दे आर हैप्पी। नाउ द इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर गोइंग टू मैनेज दैट। इस ये ही एक बेसिकली इन अ वेरी ब्रीफ एस्पेक्ट इज द वे ऑफ फैक्टरिंग। अनदर वे यू मैनेज रिस्क, स्पेशली क्रेडिट रिस्क, अगर क्रेडिट, क्योंकि हम क्रेडिट के टॉपिक पे हैं, इज वाया द यूज ऑफ एलसीज। बैंक्स के अंदर देयर इज अ प्रोडक्ट नोन एज एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट basically is like, it's like a guarantee by the bank that you'll be paying। ठीक है, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, हम कभी लेंडिंग प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो हम उसमें इसको पूरा कवर करेंगे। just to give you an idea, letter of credit is like a guarantee। so for example,
if I'm dealing with someone in another country or even in Pakistan, और हम दो parties हैं, एक buyer है एक seller है, जो basically दोनों parties हैं, they don't trust each other, right? Because there's a risk of default. Seller, as a seller, मुझे क्या डर है कि मुझे सामने से पैसे नहीं मिलेंगे ना, ठीक है? तो मैं सामने वाली पार्टी को बोलूंगा कि whatever you're going to buy from me, you buy it on the basis of a letter of credit. इसमें होगा ये कि जो बायर है उसका बैंक गारंटी करेगा that if the buyer fails to pay the payment, the bank is going to pay. So एज अ सेलर मैं सिक्योर हो जाता हूँ, मेरा रिस्क जो है, मेरा क्रेडिट रिस्क का जो एस्पेक्ट है, जो डिफॉल्ट रिस्क का प्रॉब्लम है, जो टाइमिंग रिस्क का प्रॉब्लम है, वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है? व्हाट आर द अदर वेज एंड हाउ डू बैंक्स डू दैट? ठीक है, बैंक्स हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट फंक्शन. रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा उनका डिपार्टमेंट होता है क्रेडिट का. क्रेडिट फंक्शन का काम ये होता है कि दे अंडरटेक क्रेडिट. Credit analysis is basically looking at the customer. अगर corporate है तो उसके financials देखते हैं आप, उसके sponsors देखते हैं, उसकी balance sheet देखते हैं. I'm sorry, I just received an error. Feroz, can you confirm I'm still audible? Yes, Amartya, you are audible. All right. So there are basically, in short, there are 5 C's of credit, right? तो वो 5 C's क्या है? That you look at the customer's character. Character में उस customer की history आ गई, उसकी balance sheet आ गई, उसके sponsors आ गए, कितना support है, किस group को belong करता है. It's all about financial analysis, the industry, so on and so forth. And you have uh, collateral. Collateral is basically the security the bank takes as a second way out. कि अगर customer default कर जाता है, how can I recover the money? जो हम लोग ने बैंक्रप्सी रिस्क की बात की थी. बिकॉज ऑब्वियसली जो आप सिक्योरिटी रखते हो, नॉट नेसेसरली कि वो सिक्योरिटी इटसेल्फ आपको उतनी वैल्यू फेच करके दे. फॉर एग्जांपल, मेरी और फिरोज की एक एग्जांपल चल रही है. आई एम सो सॉरी टू ड्रैग फिरोज कॉन्स्टेंटली इनटू दिस. फिरोज ने No मुझसे जो worries. लोन लिया था, अब डिस्पाइट द फैक्ट आई नो फिरोज, बट मुझे देखो एक रिस्क है एंड आई वांट टू मिनिमाइज दैट रिस्क, राइट? तो मैंने फिरोज से अगेंस्ट दैट लोन कोई सिक्योरिटी रख ली, जिसको हम कोलैटरल बोल रहे हैं. अब वो कोई भी एसेट हो सकता है जो विच एवर फिरोज गिव्स मी. सो लेट्स अज्यूम फिरोज ने मुझे अपनी गाड़ी दे दी. बोला यू कैन हैव दिस कार, you can have it in your possession. If I'm unable to pay you, you can sell my car and you can recover your money, right? So मैंने गाड़ी तो ले ली, बट द कार इटसेल्फ, नाउ नंबर वन, जब मैं बेचने जाऊंगा तो कार की, अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक और रिस्क अराइज हो जाएगा, विच इज नाउ वी अंडरस्टैंड लिक्विडिटी रिस्क. मे बी एसेट की कंडीशन सही ना हो, मे बी एसेट की मार्केट इतनी ना हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ना एंड देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट. क्रेडिट का पूरा एक फंक्शन है, इसके पीछे अलग एक अंडरस्टैंडिंग है. वी नीड अ डिफरेंट class for all that, right? So आप कैरेक्टर कर लेते हो, आप कोलैटरल करते हो, आप उसकी कैपेसिटी देखते हो. कैपेसिटी इज वेदर यू कैन पे बैक और नॉट. आप उसके उस पे कोवेनेंट्स लगाते हो. कोवेनेंट्स इज बेसिकली कंडीशंस. यू कैन पुट कंडीशंस ऑन अ कस्टमर टू रिस्ट्रिक्ट कि वो पैसे ना दे. फॉर एग्जांपल, एबीसी कंपनी को मैंने लोन दिया है, तो मैंने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि फॉर द नेक्स्ट 3 years, टिल सच टाइम यू आर बैंकिंग विद अस, यू हैव टेकन आवर लोन, आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते. ठीक है, वी कैन डू दैट. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ कोवेनेंट्स. सो why am I putting this condition? Again think, क्योंकि मैं एक बैंक था, मैंने उसको पैसे दिए, मुझे क्रेडिट रिस्क नजर आता है. कितने एक्सटेंट का नजर आता है, ये मैंने बताया. दो तरीके हैं, या तो सब्जेक्टिव होगा या मैं उसको मॉडल के थ्रू आइडेंटिफाई करूंगा. मैंने कहा रिस्क मेरा हाई है. रिस्क मेरा हाई है तो मुझे उसकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी करनी है, बिकॉज रिस्क हाई मीन्स देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और व्हाटएवर, राइट?
and then there is capital के customer ने कितना capital put in किया है. इन सब के अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शन है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. ये हमने समझ लिया कि देखो एक प्रोसेस ये है दैट वी डू क्रेडिट एनालिसिस, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड वी ट्राई टू इंश्योर द रिस्क इज मिनिमाइज्ड, बट स्टिल यू कैन नेवर बी श्योर. इसके बाद क्या होता है, देखो इंडिविजुअली तो ये इट्स फाइन, मैंने फिरोज की बात की, इट्स फाइन. लेट्स अज्यूम कि एक फिरोज साहब थे, इस तरह मल्टीपल लोग और थे, रोहान था, एंड देयर वाज हम्माद, एंड देयर वाज आई बिलीव नादिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे लोगों को मैं पैसे दिए जा रहा हूँ. इंडिविजुअली मैंने सबको असेस किया, बट कलेक्टिवली देयर इज अनदर प्रॉब्लम. व्हाट इफ ऑल ऑफ देम वर्क फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन? जिन 10 लोगों को मैंने पैसे दिए, ये 10 के 10 एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो इसका मतलब इनकी सैलरी एक ही कंपनी से आती है. ये मैंने कौन सा रिस्क क्रिएट कर दिया? मैंने कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर दिया. So I need to be sure that when I'm giving out the loans, I'm not concentrating myself. मैं diversified रख रहा हूँ. This is all part of what is known as portfolio management. Individually तो assess करना है loans को, collective basis पे भी मैंने assess करना है कि on the base collectively the portfolio, the loan portfolio, or the investment portfolio, it's not concentrated. And if it's concentrated, तो उसको मैं किस तरह manage करूँगा? So there are different ways, there are different approaches banks use. कुछ banks आपको limits assign करते हैं, कुछ banks ratios assign करते हैं कि इस तरीके से आपने उसको invest करना है. एक सेक्टर में, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर में 10% से ज्यादा हम लोन नहीं देंगे इन टोटलिटी, सो दैट अगर हमें पूरा टेक्सटाइल सेक्टर डूब जाता है फॉर एग्जांपल, तो मेरा टोटल लॉस कितना. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को भी आपने क्वांटिफाई करना है. ये कैसे करूंगा? मेरे तमाम लोन्स एक तरफ आ गए. नाउ लेट्स अज्यूम दैट आई हैव इन टोटल गिवन 50 लोन्स. आउट ऑफ दिस 50 लोन्स, 30 loans are concentrated to ABC company people. आप लोग जितने हो, we have like 120 people. Out of this 120 people, I've given loan to 50 people. Out of these 50 people, 30 works for the same company and 20 works in various other companies. Now think about this. मुझे खबर आती है कि जिस कंपनी के लिए 30 लोग काम कर रहे हैं, that company is facing liquidity crunch. उसके हालात कुछ सही नहीं है. So now what I need to look at कि on a portfolio basis, on an overall basis, मैं किधर खड़ा हूँगा, मेरा loss कितना होगा. Because when the company defaults, assume कर लेते हैं, insolvent हो जाती है, तो वो 30 लोग most likely insolvent हो जाएंगे. So this in turn is going to affect my credit portfolio. So how I'm going to do this? Again, आप historic patterns देखते हो और historic patterns की base पे आप provisioning करते हो. It's same as aging analysis. Aging analysis में हम क्या कर रहे होते थे? हम individual clients को देखते हैं, individual clients की percentage apply करते हैं, उसको collective करके एक provisioning बनाते हैं. The portfolio management aspect does exactly the same thing. Obviously, the criteria is different. There are a lot of different criteria to it, but the concept remains absolutely same. I hope I've answered and covered this in a way that you guys can understand. There's an example. It's the same example which we were discussing, but मैंने इसको quantify भी कर दिया, so you guys can have a look later on. ठीक है? और क्या तरीका है? ये तो हो गया as far as हम उसकी बात कर रहे हैं, लोन्स की. ये सारा कुछ लोन्स का था. ठीक है, ये सारा सब कुछ लोन्स का था. बट व्हाट इफ यू इन्वेस्ट इन सर्टेन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी? ये भी तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी भी तो क्रेडिट रिस्क तो देगी ना, चाहे वो बैंक इन्वेस्ट करे चाहे आप इन्वेस्ट करो. इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं?
इवन लोन्स के लिए क्या ऑप्शन है, तो हमारे पास क्रेडिट के डेरिवेटिव्स, वी नो डेरिवेटिव्स, बट क्रेडिट के भी डेरिवेटिव्स होते हैं, दे आर मल्टीपल डेरिवेटिव्स। ठीक है, I've just kept two basic derivatives credit ke for our understanding, so that we at least get an understanding of how we can transfer the risk. And remember this, credit derivative is just like a normal derivative, जो भी financial derivative होता है, ये करता ये है कि जो रिस्क पार्ट होता है आपका ट्रांजैक्शन का, उसको ट्रांसफर कर देता है। हमारे पास दो जो ऑप्शंस हैं, उसको मैं डिस्कस करता हूं। यू हैव क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स and you have collateralized debt obligations. What are these? Credit default swaps, in the most simplest sense, is taking an insurance. ठीक है, क्या मतलब taking an insurance? Again, and Feroz. Now, मैंने फिरोज को पैसे तो दिए, but I'm a bit Feroz my default, and मैंने सारी अपनी बहुत मैनेजमेंट सब कुछ कर लिया, सब कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब करी हुई है, बट स्टिल आई हैव दिस फीलिंग दैट बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, वो कंपनी डूब जाएगी, 30 लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कर लिया किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। पाकिस्तान में नहीं होता अगेन, बट this happens a lot in European Union, it happens a lot in US. Credit default swap is an over the counter derivative. ठीक है, ये ट्रेड व्रेड नहीं होता, दिस इज ओवर द काउंटर, और बाहर वहां पे इंश्योरेंस कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं। यू गो, यू टेल देम कि ये मेरा एक्सपोजर है, इसके अगेंस्ट मुझे सीडीएस करवाना है। इफ दे एग्री, दे विल चार्ज यू अ प्रीमियम, जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस पे प्रीमियम चार्ज होता है। और होता ये दैट इफ लेट्स अज्यूम दीज 30 पीपल आर गोइंग टू डिफॉल्ट, द इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू कॉम्पनसेट मी। जैसे इट्स जस्ट लाइक हाउ इंश्योरेंस वर्क विद डिफरेंट टेक्निकलिटी। The CDS is one of the prime factor, or one of the prime contributor within the 2008-2009 financial crisis. The CDS and the CDOs. CDOs क्या था? CDOs is collateralized debt obligation. ये जो मैंने लास्ट टाइम आप लोग से डिस्कस किया था अबाउट मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, ये जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बैंक्स की और फ्रेनी मैक की एग्जांपल्स ली थी, दोज वर द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडीओज। जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक ने बना के बेची, these are called collateralized debt obligation. So let's assume a smaller bank in Pakistan, XYZ Bank, I don't like to take names of institutions, XYZ Bank का पोर्टफोलियो है बहुत ज्यादा और बड़ा, उसको लगता है रिस्की हो रहा है, तो एक बड़ा बैंक आता है, उससे बोलता है ये सारे लोन्स मुझे बेच दो, वो उसको बेच देता है। वो बड़ा बैंक मजीद कहीं जगहों से लोन्स खरीदता है, सारे लोन्स इकट्ठे करता है, उनको कन्वर्ट करता है सिक्योरिटीज में, जिनको हम बोलेंगे सीडीओस, और वो मार्केट में एज सर्टिफिकेट्स फ्लोट कर देता है। सो जो छोटा बैंक था, उसने अपनी रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर दी, उसने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया टू द बिगर बैंक, और बिगर बैंक ने कैसे ट्रांसफर किया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया सिक्योरिटीज में, और वो ट्रांसफर हो गया पब्लिक के पास। This all covers the credit risk aspect. Do you guys have any question? If you can ask jaldi se, because we are a bit short of time and at least want to cover market risk. Feroz, if there are any questions. Feroz, I can't hear you if you're speaking. Can you hear me now? Yes. I was saying there aren't any questions yet. I think you can continue and we can take the questions in the end. All right. Acha Janab.
Liquidity risk, we've covered again. Liquidity risk था क्या, आता क्यों है, we understand, हम लोग ने दोनों उसके एस्पेक्ट पढ़े. FIs को क्यों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है लिक्विडिटी रिस्क का, मैंने उसमें एल्को की भी बात की. देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रॉब्लम, स्पेशली बैंक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, the deposit they take, they actually use that money to lend. Now these deposits are of two nature. They can be demand liabilities, they can be time liabilities. इसको बोलते ही टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज है. डिमांड लाइबिलिटीज का मतलब और टाइम लाइबिलिटीज का मतलब हमें समझना है. इन द मोस्ट सिंपलेस्ट सेंस, देखो दो टाइप के अकाउंट्स हम लोग खोल सकते हैं बैंक्स के अंदर. एक सेविंग्स अकाउंट होता है, राइट. एक, बल्कि सेविंग अकाउंट कभी नहीं बोला, एक आप फिक्स टर्म डिपॉजिट कराते हो और एक आप करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खोल लेते हो. फिक्स टर्म के अंदर देयर इज अ टर्म डिफाइंड दैट यू आर प्लेसिंग दिस मनी विद द बैंक फॉर लेट्स से 4 years. This is known as a time liability. The bank knows the time for this liability. So the bank knows कि मैं एटलीस्ट इसको अगर 4 साल के लिए हमाद ने पैसे रखवाए तो मैं एटलीस्ट 3 साल के लिए इसको आगे लेंड कर सकता हूँ. करेक्ट. बट देन देर आर सेविंग्स अकाउंट एंड देर आर करंट अकाउंट्स. आप खुद देखें, आपके पास भी अकाउंट्स हैं, यू जस्ट गो टू द एटीएम, यू पुल डाउन द मनी, पुल आउट द मनी, नो वन स्टॉप्स यू. These are demand liabilities for the bank. It means whenever a customer demands it, the bank is the depositor demands it, the bank is supposed to pay back. So bank never knows कि इसको पे बैक कब करना पड़ जाएगा. So for that वो हिस्टोरिक पैटर्न्स देखता है, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, वो एक एस्टिमेशन करता है when would I have to pay back. So in order to have this, the bank needs to be very liquid all the time. The ELCO, the Asset Liability Committee, actually ensures this management. Basically, liquidity risk की management हम इस तरीके से कर रहे हैं. हमें पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए क्या रीजन है. रीजन है मिसमैच इन मेच्योरिटी. बैंक लेंड कर रहा है, ये बैंक का एसेट है, बैंक पैसे ले रहा है, डिपॉजिट ले रहा है, ये बैंक की लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम है. तो हमारे पास किस तरीके से बैंक इसको मैनेज करता है, वाया आइडेंटिफाइंग लिक्विडिटी गैप. बैंक ये देखता है कि मेरे पास गैप कितना आ रहा है. गैप कैसे पता चलेगा, गैप ऐसे पता चलेगा, बैंक हिस्ट्री देखेगा हिस्टोरिकली, मेरे पास किन सीजन्स में, किन मंथ्स में ज्यादा विड्रॉज होते हैं. जिन सीजन्स में ज्यादा विड्रॉज होते हैं, इन सीजन्स में मेरे पास एसेट्स मौजूद होने चाहिए, लिक्विड एसेट्स. अच्छा, तो इसका मतलब अगर बैंक के पास नहीं है तो बैंक नीड्स टू हैव सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स एंड रिजर्व्स एक्सेट्रा. For example, in the month of Ramzan, near to Christmas, near to Eid al-Adha, near to Diwali, बैंक ने नोट किया है कि within this month or within these 15 days, बैंक से withdrawals काफी significant amount के होते हैं. So within these periods, the bank knows the liquidity gap, bank needs to be prepared for that. How do we banks prepare for that? Of course, वो फिर short term investments करेंगे, liquid assets रखेंगे, कुछ cash reserve रखेंगे, so on and so forth. और जब वो investments भी कर रहे होंगे तो remember this, that would be leading to market risk. आपके पास तीन टाइप की positions आती हैं liquidity gap में. एक cash matching होता है कि आपके पास जितने assets हैं उतनी ही liabilities होती हैं. आपके पास अंडर फंडिंग है, इट मींस आपकी लाइबिलिटी ज्यादा हो रही हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम. एंड आपके पास ओवर फंडिंग है, यू हैव एक्सेस अमाउंट अवेलेबल विद लेस लाइबिलिटीज. दिस इज फॉर अ बैंक also a problem. So technically bank wants to achieve cash matching, which is technically not possible. There's always some portion of underfunding and overfunding, but you need to manage this. ठीक है. And I'll talk about market risk.
we know this, हम लोग ने मार्केट रिस्क कवर कर लिया है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा. आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ डू वी मैनेज देम. देखो, मार्केट रिस्क को कवर करने के दो चार तरीके हैं. एक रहा पोर्टफोलियो का, द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी. यू डाइवर्सिफाई योर investments. That is going to help you in minimizing your risk. Okay, what are the ways? You can take out derivatives. आप swaps ले सकते हो, आप options कर सकते हो, आप futures में जा सकते हो, आप forwards create करा सकते हो, जो हमारे पास चार पांच basic instruments है. अच्छा, as far as we discuss and as far as we know, interest rate के तो ये derivatives available हैं, forex के भी ये derivatives available हैं, और कुछ commodity के भी ये derivative available हैं. बट याद रखिएगा, हम लोग ने मार्केट रिस्क में इक्विटी को भी पढ़ा था, और इक्विटी इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो वो इक्विटी में क्या है, आई वांट टू फर्स्ट कवर दैट आई देन आई कम टू VAR. बिकॉज वी आर एक्सपोज टू इक्विटी रिस्क अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, और उसको कैसे डील करते हैं. इक्विटी रिस्क को पहले तो क्वांटिफाई कैसे करते हैं. देखिए, इक्विटी को हम के रिस्क को हम क्वांटिफाई कर रहे होते हैं वाया द स्टैंडर्ड डेविएशन और the beta coefficient. ये सबसे important है, the beta coefficient. And if you guys try to recall, एक equation होती थी, the capital asset pricing model. उस मॉडल के अंदर भी रिटर्न्स को रिस्क से एसोसिएट करते थे, और रिस्क को हम कहते थे बीटा. वो बोलते थे दिस इज द सिस्टमैटिक रिस्क. वी यूज्ड टू क्वांटिफाई द मार्केट रिस्क वाया बीटा. सही है, हमें पता तो चलता है हम उसके अगेंस्ट हायर रिटर्न तो मांगते हैं, बट हाउ कैन आई हेल्प इन दिस रिस्क. We can actually manage this risk. Again, make a portfolio, diversify your risk, but still a certain portion of risk remains. For that, there is a derivative known as stock futures. जैसे interest rate futures available होते हैं, जैसे forex के futures available होते हैं, इसी तरह stocks के भी future available हैं. Just like those derivatives, हर stock का future available नहीं होगा. अब ये एक प्रॉब्लम है. अब I'm assuming that you guys and all of us actually understand how derivatives work. मतलब फ्यूचर क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबकी है कि फ्यूचर्स क्या होते हैं. स्टॉक फ्यूचर्स भी बिल्कुल सिमिलर है. सिर्फ हम इसको ये समझ लेते हैं कि स्टॉक फ्यूचर के साथ इशू क्या है. आपने ABC कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, उसके स्टॉक फ्यूचर अवेलेबल ही नहीं है. जैसे करेंसी में प्रॉब्लम होता है, तो अब क्या करूं. So what we have another derivative. It's called stock index future. इंडेक्स फ्यूचर क्या होता है कि पूरे इंडेक्स के ऊपर आप एक फ्यूचर क्रिएट कर लेते हो, फ्यूचर ले लेते हो, एक डेरिवेटिव ले लेते हो. इंडेक्स से मुराद लाइक KSE 100 इंडेक्स. बट दिस वर्क्स, the stock index future works generally when you have a portfolio. आपके पास एक इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपके पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. उसमें कुछ शेयर्स जो हैं उनके फ्यूचर्स हैं, कुछ के नहीं है. अब आपका रिस्क है, यू नो कि भाई आज मार्केट पाकिस्तान के अंदर जैसे बहुत वॉलेटिल है. You don't know how stock market would go and there's a risk for you. तो आप क्या करते हैं, आप एक स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर ले लेते हैं कि भाई इररिस्पेक्टिव मार्केट 6 महीने के बाद जहां पे भी होगी, आई एम गोइंग टू सेल माय पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस कि भाई स्टॉक मार्केट की ये प्राइसिंग है. दिस इज हाउ यू मैनेज योर equity risk. And this final thing I'm just quickly going to discuss is market risk में सबसे ज्यादा importance जो है is a concept known as value at risk, VAR. It's a model. There are three ways you can calculate the value at risk. ये कैसे होता है? It's a mathematical model. इस मॉडल के अंदर हम दो
वैल्यूज डिफाइन करते हैं, या तो मैं 95% कॉन्फिडेंट होता हूं या मैं 99% कॉन्फिडेंट। क्या मतलब? I say that I'm 95% confident that on any given period of time मेरा loss इससे ज्यादा नहीं होगा, predicted loss. So what I try to do, I try to predict my loss. If there's a 95% confidence level, it means there's a 5% probability कि loss हो जाएगा. इसी तरह जब 99% confidence level होगा तो 1% probability of loss होगा. तीन वैल्यूज पे काम होता है, 90%, 95% and 99%. And those of you who are a bit familiar, एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है? तो वो it goes to a very different direction, but get an idea that value at risk, as the name suggests, हम value at risk इसलिए यूज करते हैं just so we can understand कि on any given day what would be my predicted value of loss. VAR मुझे इस चीज में हेल्प करता है. As I've mentioned here, VAR provides a qualified answer to the question as to how much we can lose in the next day or a week or a month or a year. If any one of you is interested in getting to know about VAR or market risk, so obviously you guys can contact me. I have certain example के लिए models available. I can share with you. इस पे तीन methods apply होते हैं: Monte Carlo simulation, variance, covariance matrix, and historical pattern. ठीक है? तो 3 ways can work with this, और जिसके थ्रू आप VAR करते हो. But generally, banks and financial institutions have a very organized systems for it. So I'll just quickly say thank you to all. I've covered almost everything except for operational risk because वो एक different ambit होता है, इसलिए I haven't covered it. जो तीन main financial risk aspects थे वो मैंने cover किए. We discussed about what are risks, what are these particular type of risks, how we identify them, and what are the ways we can quantify and manage them. Of course, there are a lot of details required, and a lot is provided in the slides. If you guys have any confusions, you guys can have a discussion on this with me later on. If any questions, please feel free to ask. Firoz, over to you. Thank you. Hamad, I had some questions marked for the end. I'll cover those, then we can jump on to the questions by the participants regarding the latest topic. So there are some questions from Kumbharaza. Kumbharaza wants to know, while you were explaining the liquidity gap, he asked, are you referring to contractual maturities or behavioral maturities? Okay. When we talk about liquidity gaps, we have to cover all the maturities. That's where I said that there's a problem, and this we have to make certain assumptions. Contractual maturities are easy to quantify. See, you have that information, but when we talk about behavioral maturities, you do not have a concrete answer to when it's going to be matured, right? But it will be. You can't say it won't be. So you see, you have to be prepared for the worst case scenario. तो उसको देखने के लिए आपको हिस्टोरिक पैटर्न स्टडी करने पड़ते हैं, आपको करंट सर्कमस्टांसेस स्टडी करने पड़ते हैं. There are models which actually, there are algorithms which actually help in identifying these mismatches, and a lot of which also works, to be very honest, on hinge. आपकी hinge क्या आ रही है, आपको लगता है इस दफा ऐसा नहीं होगा, and you take a chance, and of course अक्सर उस chance से आप problem होता है. Last time we talked about इंटरबैंक लेंडिंग. वो इंटरबैंक लेंडिंग क्यों आती है? एट वन पर्टिकुलर डे एक कस्टमर आया, उसने आके बोल दिया मुझे विड्रॉल कराना है सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम अ ब्रांच को तो करना है इररिस्पेक्टिव बिकॉज इट्स अ डिमांड लायबिलिटी.
ब्रांच ने वो पैसे देने हैं, अब वो ब्रांच ने पैसे दे दिए, बट द प्रॉब्लम इज ब्रांच नीड्स टू बी इन अ स्क्वायर पोजीशन. इट मींस उसके एसेट्स और लायबिलिटी की अमाउंट मैच होनी है. बैंक, वो ब्रांच क्या करती है, बैंक क्या करता है, ब्रांच कॉन्टेक्ट्स द ट्रेजरी अरेंजेस द फंड्स, द गैप जो क्रिएट हुआ है फिलहाल के लिए वो अरेंज करके देता है आपको फ्रॉम अनदर बैंक. फिर नेक्स्ट डे बैंकिंग स्टार्ट होती है, फिर वो पैसे कहीं और से अरेंज होते हैं, देन अगेन द साइकिल वर्क्स. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. यस फिरोज, फर्दर. There's another question from Mahmood Eidi. It's more of a general knowledge question. So, does Islamic banking do factoring? Yeah, any bank can actually do factoring, but of course, when Islamic bank does factoring, it has to ensure that the principles behind which the Islamic bank is working are not violated. Matlab, uh, I'll just sorry, I'll take 5 minutes. For example, I worked for Islamic bank for a very long time, and the Islamic bank actually acquired a conventional bank. So, जो loans recover किए भी उसकी इनकम को बैंक रिकॉर्ड नहीं कर सका, चैरिटी करता रहा. रीजन बीइंग, even though we were receiving the income, but the problem was that the product or the transaction was not converted into the Islamic mode. So factoring to ho sakti hai, because you're selling it, you can sell it, but uska mechanism or जिसको आप sell कर रहे हो, we need to ensure that the system remains within the principles of Sharia as defined by the Sharia advisor. Further question. Okay, Kumbharaza again. He wants to know, how do you quantify concentration risk? Okay. Concentration risk is quantified, let's say, in a way that perhaps you have sectoral exposures. आपने different percentages define कर देनी है पहले ही कि and that depends upon your risk appetite. For every person, it's different. For me, let's say I out of 100 rupees, I would put maximum 20% into cement sector, 30% to sugar sector, 15% to automobile, uh, so on and so forth. Now, this is again based on my understanding and my risk appetite. Your might be different. Now, अब जब जैसे जैसे मैं loans दे रहा हूँगा, मैं इन sectors के ऊपर capping लगाऊंगा. मैं देखूंगा कि मैंने अपना 15% को breach तो नहीं किया. अब one way to quantify is, what if मेरा मैक्सिमम सीमेंट सेक्टर में 20% था, मैंने एक ही सीमेंट कंपनी को दे दिए, देन अगेन इट्स कंसंट्रेशन रिस्क है. एक तो ओवरऑल कंसंट्रेशन रिस्क है, ये इंडस्ट्री का भी कंसंट्रेशन रिस्क है. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली क्वांटिफाई इट, बिकॉज व्हाट as an analyst you'll be doing, you'll be covering the industry analysis, you'll be covering the economy, so on and so forth. So आपको एक आइडिया लग रहा होता है कि किस एरिया में probability of default बढ़ रहा है, because none of these probabilities are being calculated. These are all subjective probabilities. There are, if you guys have studied mathematics, business mathematics, तो उसके अंदर probability आपकी या तो subjective हो सकती है या आपकी objective हो सकती है. तो probability depend करती है आप किस तरीके से calculate कर रहे हैं. ठीक है. Further question, please. Last two questions. Kiran has asked multiple times, what are the reasons behind the volatility? Can you give some examples? See, there are a lot of examples for it, but remember, this volatility is generally because of markets, and इसके पीछे एक बहुत बड़ा topic भी है, debates भी हैं. It's about market efficiencies and market inefficiencies. Theories हैं, but see, markets make assumption. Let's just talk about this. आसान लफ्जों में बात करते हैं. मार्केट को खबर आती है कि लेट्स से एक दो दिन से जैसे चल रहा है दैट पाकिस्तान इज सेट टू गेट द ट्रांच फ्रॉम IMF. अब the market makers, the people who are actually engaged in the market, who are buying a lot of things, who are selling heavy volumes, वो predictions बनाते हैं. They guess, they speculate.
ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट्स ऊपर जाती हैं, मार्केट्स नीचे जाती हैं। ये तो मार्केट की वॉलेटिलिटी हो जाती है ओवरऑल इंफॉर्मेशन पे। अब होती है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की अपनी वॉलेटिलिटी, वो भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है कि हाउ गुड your output is, how good is your business, how good is your news briefing, so on and so forth. अब एक कंपनी है, उसको उसके जो ओनर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो अपने प्लान्स कहीं शेयर नहीं करती, दे डू नॉट गिव रीजंस फॉर लॉसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब फॉर एग्जांपल एक कंपनी कॉन्स्टेंटली 3 क्वार्टर से लॉस आ रहा है और कंपनी की तरफ से कोई सीएफओ ने या किसी बंदे ने अभी तक कोई ब्रीफिंग नहीं दी, मार्केट को बताया नहीं दैट व्हाई आर वी फेसिंग दिस लॉस, तो क्या होगा, वॉलेटिलिटी आएगी, पीपल वुड स्टार्ट गेसिंग एंड द गेस कैन बी रॉन्ग, सो वॉलेटिलिटी आती है। मार्केट में रूमर फैल गया कि भाई एक्स वाई जेड कंपनी सेल होने जा रही है, सस्ते दाम में हो रही है, ज्यादा दाम में हो रही है, दिस ऑल क्रिएट्स पैनिक, वॉलेटिलिटी आ गई। इसीलिए न्यूज ब्रीफिंग होती है, इसीलिए एनालिस्ट ब्रीफिंग होती है, जिसकी वजह से दे ट्राई टू कवर अप द सिचुएशन, दे ट्राई टू प्रेजेंट यू विद द सिचुएशन कि नहीं, ये रीजंस हैं जिस वजह से हमारे रिजल्ट्स ऐसे आए थे या हमारी प्राइसेस पे इफेक्ट आया। फिर मार्केट्स इन चीजों को एब्जॉर्ब करती है एंड इवेंचुअली थिंग्स बिकम बेटर और वर्स, व्हाटएवर। फिरोज। Kemal, Nasir wants to contact you for VAR. Nasir, if you're part of the group, Hamad is also on that group. You guys can exchange contact. Hamad can share his email, and you guys can have a little chat about VAR. Yes, yes, of course, of course. So Kasim is asking, how can I get handouts file? Kasim, there's a handout section on the control panel of GoToWebinar. You can download the recording links file, and you can access any link that you want to. And sorry to interrupt, but I'll be sharing these slides with you, Feroz. You can share it with the participants so that whenever they want to, go through it and want to study more, they can. Sure. I'll be uploading these files tomorrow, first thing, along with the recording link. And Nasir, I would recommend that you download the QR code in the handout section. You can scan that through your WhatsApp, and you will be able to join the group. And I think that's it. No more further questions. We will be coming back the day after tomorrow for marketing of financial services and SME banking. After that, there will be 2 more sessions, and then Hamad will be coming back for the rest of the sessions. And thank you, Kumbar. Thank you so much for the participation. I think the most questions were raised by Kumbar. Kumbar also shared that he is the ALO secretary, I guess, the one that Hamad mentioned, ALCOs. Perfect. Yes, Elco. So ALCO, yeah. So thank you so much for the participation and for your time. Thank you so much, Hamad. Thank you And so much, Nisar, Feroz. you Thank can you so much, contact them. everyone. Sorry, Hamad. I'm saying thank you thanks to all of you. Feroz, you of course for managing everything, and the participants. It was a wonderful session. I'll see you guys soon, inshallah. Take care. Sure. Thank you, everyone. See you guys in the next session.